I think I am live. Hi everyone. पेपर में हमारे रह गए 9 दिन। और अगर तुम ये सब वीडियो सिर्फ इसलिए देखने आते हो कि स्ट्रेटेजी, कि 9 डे स्ट्रेटेजी, 10 डे स्ट्रेटेजी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और ऐसा कुछ होता भी नहीं। मतलब तुमने अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं करी तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये लास्ट के 9-10 दिन हेल्प करने वाले हैं। ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा जड़ी बूटी। बाकी अगर तुम ओके, हाँ, तो तुम्हें वो स्ट्रेटेजी तो नहीं मिलेगी। बाकी ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मान लो अभी तुम्हारे ही तुम्हारे लिए शायद शायद हेल्पफुल ना हो, बट जो नए बच्चे फिर से स्टार्ट करें, जिनके लिए मुश्किल हो जाता है ये बिलीव करना कि यार नहीं यार हमसे तो नहीं हो पा रहा, इतना हार्ड है, इतने सही नहीं आ रहे, उन सब के लिए है कि एक अगर तुम करते रहते हो, सही से एनालाइज करते हो, तो तुम्हारी प्रोग्रेस होना तय है। उस चीज के लिए ये वीडियो अभी तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, बट हाँ, इनमें बीच बीच में मैं कुछ ऐसी, मैं जब ये पूरा खत्म हो जाएगा मैं एग्जाम से एक दिन पहले और बताऊंगा जो मैंने यहाँ से सीखा, और तुम जो अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो अगर तुम अपने आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह रहे हो इनमें, तो वो चीज तुम यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये कैसे था वो कैसे था। क्लियर तब कर सकते हो जब मुझे आता होगा। मुझे नहीं आता होगा तो तुम क्लियर नहीं कर सकते हो, वो तुम कहीं और से ही करना पड़ेगा। ऑलराइट। और हम 2020 का स्लॉट वन के क्यूए और वीआरसी कर चुके थे। तो मैं देख रहा हूँ, सॉरी, क्यूए और डीएलआर कर चुके थे, और मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ डीआईएलआर वाली वीडियो ज्यादा देखते हैं, क्यूए और वो वाली नहीं। आई डोंट नो क्यों सबको, मतलब सब, आई डोंट नो से क्या मतलब है। मतलब मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर लोगों की डीआईएलआर कमजोर होती है, और वो कमजोर नहीं होती है, तुम लोग होपलेस हो जाते हो, तुम लोग फोकस नहीं करते हो जैसा मैं वीआरसी में करता हूँ। और कुछ भी नहीं है ना। 240 हो रहा है तो हम इसे करना शुरू कर देते हैं, ताकि अच्छा, मैं अभी नहीं करता, थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। मैंने उस दिन दिया था LRDI 2020 वाले स्लॉट का, स्लॉट वन का 2020, और उसके बाद स्लॉट वन का ही क्यूए दिया था, जिसमें हमारा काफी इंप्रूवमेंट है। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 26 में से, और मेरे 14 सही थे। इसमें मैंने क्यूए में मैंने अटेम्प्ट किए थे 14, जिसमें मेरे 13 सही थे। ओके, तो एक एक गलत हुआ है, तो आई थिंक मैं तो यार उससे हैप्पी हूँ। अगर मेरे डीएलआर में इतने एक्चुअल एग्जाम में सही हो जाते जितने कल इसमें हुए, तो मतलब इजीली 98, 99, 99 ऊपर ही मानो तुम। और ओवरऑल एग्जाम में भी मेरे अगर क्यूए और डीआई में दोनों मिला के इतने सही होते, और फिर भी एआरसी में मेरे 10 भी सही हो जाते, इजीली 99.5 प्लस मेरी बन जाती परसेंट है। और यही चीज हमें कैरी करके अपनी चलनी है। कल हमने वीआरसी का जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमने सीख लिया था कि यार वीआरसी में एक चीज और हम अप्लाई करेंगे कि कुछ भी हो जाए हम दोबारा रीड करने से बचेंगे पहली गो में। जब भी हम पैसेज को पहली गो में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते टाइम, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें जो करना है वो कर लेना, बट मोस्टली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज से बचा करो कि पहली गो में तुम उसे बार बार रीड ना किया करो, चाहे लाइन समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है। क्योंकि इससे तुम्हारी आदत खराब होती है, तुम्हारा ब्रेन उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाता है कि वो पहली बार में उसे रजिस्टर ही नहीं करता है मोस्ट ऑफ द डेटा को, कि जो भी वहां पर लिखा है तो वो उसे हाँ क्या दोबारा तो पड़ेगा ही, दोबारा तो पड़ेगा ही। तो ये चीज मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ये चीज तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए कि लगातार बहुत बार नहीं पढ़ना, मतलब दूसरी बार भी नहीं पढ़ना चाहिए। जाओ करो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हाँ क्वेश्चन में पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि यार हाँ, अब मुझे वापस से देख लेना चाहिए कि वहां पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो तुम देख सकते हो, बट पहली बार में मत पढ़ना, 2-3 बार, और एग्जाम में पढ़ लेना, अभी यहाँ पे मत पढ़ना प्रैक्टिस टाइम। ओके। और मैं कुछ बताने तो वाला था तुम्हें। 9 दिन है, मेरा तीसरी शिफ्ट में है, और जिस तरीके से मुझे लग रहा है अगर मैं वीआर से थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँ ना, और तुम लोगों को डिपेंड करता है क्या वीक है तुम में से मतलब तुम्हें जो लग रहा है तुम्हारा वो वीक है, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बताओ, मुझे एक आइडिया लगे कि हाँ यार तुम्हारा क्या वीक है, क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। बाकी हम्म
बाकी मेरा तो वीआरसीबी के वीक है, डीएलआर ठीक है, क्यूए भी मेरा ठीक हो जाएगा। क्यूए पे मेरा, मैं तो बता ही चुका हूँ क्यूए में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अर्थमेटिक ज्योमेट्री इन्हीं पे करूंगा, अलजेब्रा में सबसे बाद में जाऊंगा। और अर्थ में तो क्या कहते हैं, डीएलआर में भी मैं छह छह करता था कि पहले छह वाला फिर छह वाला। दिक्कत ये, तुम्हें एक छह वाला को छोड़ना पड़ेगा जो भी हार्डर होगा, उसके बाद तुम छह चार चार ये अटेम्प्ट करना। छह छह चार मत अटेम्प्ट करना, बिल्कुल मतलब सही नहीं रहेगा। सिमिलरली बीआरसी में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं कर पाऊं, कितने कर पाऊं, 22 24 क्वेश्चन आते हैं ना कितने। इस वाले में तो शायद ज्यादा क्वेश्चन है, 26 से ज्यादा क्वेश्चन है। बट मैं चाहता हूं कि मैं अगर 22, क्योंकि 20 उसमें आते हैं डीएलआर में, 22 इसमें आते हैं। हाँ तो 66 आते हैं टोटल टोटल क्वेश्चन, और तुम्हारे 24 आते हैं बीआरसी में। तो मेरे 10 भी ठीक हो जाते हैं ना, तो आई विल बी हैप्पी। मुझे बीआरसी में ज्यादा परसेंटाइल नहीं लानी, बस इतनी आ जाए कि ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ही कम है, जैसे मेरी लास्ट बार आई थी कि 70 परसेंटाइल। वो चीज खराब कर देती है सारा गेम। ओके, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे में 11:44 हो रहा है, 11:44 और 40 मिनट, मतलब कि हम, मतलब 2:44 हो रहा है और हम 3:25 पे अपना बंद कर देंगे। करूंगा मैं वही, सिर्फ समरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और पैसेजेस अटेम्प्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो इसका लिंक, मैंने एग्जाम पेपर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर कर लेना। तुम्हें सिर्फ अपने आंसर चेक करने हैं या किसी एक पर्टिकुलर पैसेज का अटेम्प्ट देखने हैं कैसे अटेम्प्ट की। वैसे मोस्टली मैं अच्छा तो कर नहीं पाऊंगा, बट अगर तुम्हें फिर भी हो सकता है मैं कोई अच्छा करूँ तुमसे, तुम्हें वो चेक करना है, तुम वीडियो अपनी स्क्रॉल करके आगे देख सकते हो। और अगर तुम्हें दिक्कत समरी में है तो वो तुम मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, कुछ मुझे बता सकते हो, कुछ मुझसे पूछ भी सकते हो। फिर हम करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। हमारा 2:45 हो गया। पैसेज वन बोलता है कि vocabulary used in speech or writing organizes itself in 7 parts of speech. 8 if you count interjections such as oh and gosh and मतलब exclamation की बात कर रहा है। Communication composed of these parts of speech must be organized by rules of grammar upon which we agree. When these rules break down, confusion and misunderstanding result. Bad grammar produces bad sentences. My favorite example from Strunk and White is this one. As a mother of five with another one on the way, my ironing board is always up. Nouns and verbs are the two indispensable parts of writing. Without one of each, no group of words can be a sentence, since a sentence is by definition a group of words containing a subject and a predicate. These strings of words begin with a capital letter and with a period and combine to make a complete thought, which starts in the writer's head and then leads it to the readers. Must you write complete sentences each time, every time? Perish the thought. If your work consists only of fragments and floating clauses, the grammar police aren't going to come and take you away. Even William Stung down that Mussolini of rhetoric reorganized the delicious pliability of language. It is an old observation, he writes. It is an old observation, sorry, द्वारा नहीं पढ़ना ही, that the best writers sometimes disregard the rules of rhetoric. Yet he goes on to add this thought, which I urge you to consider. Unless he is certain of doing well, the writer will probably do best to follow the rules. The telling clause here is unless he is certain of doing well. If you don't have a rudimentary grasp of how the parts of speech translate into coherent sentences, how can you be certain that you are doing well? How will you know if you are doing ill? For that matter, the answer, of course, is that you can't, you won't. One who does grasp the rudiments of grammar finds a comforting simplicity at its heart, where there need be only nouns, the words that name, and verbs, the words that act. मतलब ऐसी कुछ बात हो रही है अभी तक मुझे इतना समझ में आया है कि ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर तुम राइटर हो तो स्पेशली, मतलब कुछ लोग राइटर होते हैं शायद जो ग्रामर पर अपना फोकस नहीं देते, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऑन द अदर हैंड, अगर इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग एंड इफ यू आर नॉट स्ट्रांग एट राइटिंग, तो तुम्हें मोस्टली ग्रामर से स्टिक करना चाहिए, तो तुम्हें फायदा मिलेगा। टेक एनी नाउन, पुट इट विद एनी वर्ब एंड यू हैव अ सेंटेंस। इट नेवर फेल्स, rocks explode, Jane transmits, mountains float. These are all perfect sentences. Many such thoughts make little rational sense, but even the stranger ones plums defied, I feel, have a kind of poetic weight that's nice. The simplicity of noun word construction is useful. At the very least, it can provide a safety net for your writing.
Strong and white caution against too many simple sentences in a row, but simple sentences provide a path you can follow when you fear getting lost in the tangles of rhetoric. All those restrictive and non-restrictive clauses, those modifying phrases, those appositives and compound complex sentences. If you start to freak out at the sight of such unmapped territory, unmapped by you at least, just remind yourself that rocks explode chain transits. And grammar is the pole you grab to get your thoughts on upon their feet and walking. वो यही बोल रहा है कि मतलब हम कई बार लिखते टाइम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी जगह क्या लिखें या फिर इस सेंटेंस को कैसे व्यक्त करें या फिर मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ऐसा तो नहीं कि हर बात हम सिंपल सिंपल टेंस में ही करते रहेंगे कुछ बातें होती है कॉम्प्लिकेटेड टेंसेस में भी जो भी और उसमें उसने एग्जांपल भी दिया है कि क्या दिया है सिंप्लीफाइंग एपोजिटिव्स मॉडिफाइंग फ्रेजेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस ये सब तो वो जब आती हैं वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट तो करती होंगी किसी न किसी तरीके से आइडियाज को व्यक्त तो करती होंगी अगर वो तुम नहीं कर पा रहे हो तो ऑलवेज रिमेम्बर कि सिंपल अपनी ग्रामर को फॉलो करो नाउन प्लस वर्ब तो वो बता रहे कि अगर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो सिंपल चीजों को प्रेफर करो राइटिंग में Inferring from the passage, the author could be more supportive of which one of the following practices. The critique of standard कौन सा इनमें से वो कौन सी प्रैक्टिस को सपोर्ट करेगा क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स कि इन्हें क्रिटिसाइज करो पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन को आई डोंट नो ये तो बात कहाँ से आ गई कैंपेन मतलब लिखा हुआ है वहां पे कुछ बट ऐसा तो कुछ नहीं कि उसके अगेंस्ट जाओ तुम दूसरा है कैंपेन डिमांडिंग दैट अ राइटर्स क्रिएटिव लाइसेंस शुड अलाउ द ब्रेकिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऐसा भी नहीं मतलब ऐसा होता है उसने बोला है बट ऐसा वो सपोर्ट करेगा ये नेसेसरी नहीं नहीं है द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दैट विल स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर एज एन एड टू राइटर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दैट विल स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर एज एन एड टू राइटर्स राइटर्स की बात नहीं है मेन बात ग्रामर की है आई डोंट थिंक ये भी हुआ क्रिएटिव राइटिंग कोर्स that focuses on how to avoid the use of rhetoric. I'm not so sure क्या होगा कि पहला है critic of standardized rules of punctuation and capitalization. The author could be more supportive of which one of the following practices. A creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric. ये हो सकता है फोर्थ वाला मतलब मुझे ये भी खास अच्छा नहीं लग रहा बट इन चारों में मुझे सबसे सही यही लग रहा है so I will go with fourth. Which one of the following quotes best capture the main concern of the passage? The telling clause here is unless. Which one of the following quotes best captures the main concern of the passage? The telling clause here is unless he is certain of doing well. नहीं पहले एक बार मैं थोड़ा सा और देख लूं vocabulary used in speech or writing organizes itself in seven parts of speech. Communication composed of these parts of speech must be organized by rules of grammar upon which we agree. Nouns and verbs are the two indispensable part of writing. Must you write complete sentences each time, every time perish the thought. If your work consists of only of fragments and floating clauses, the grammar police aren't going to come and take you away. Even William Stung, the Mussolini, rhetorically recognized the delicious pliability of language. It is an old, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा ब्रो अपने को तो या फिर मैं हार नहीं माने कोई बात नहीं सॉल्व करके देखते हैं which one of the following quotes best captures the main concern of the passage the telling clause here is unless he is certain of doing well which one of the following quotes nouns and verbs are the two indispensable parts of writing I will go with second take any noun put it in with any verb and you have a sentence it never fails rocks explode yes of none of the following sentence can be seen as similar except none of the sentences can be seen as similar. It never fails. Rocks explode, chain transmits, mountains float.
A group of nouns arranged in a row becomes a sentence. Take any vegetable, put some spices in it, and you have a dish. None of the following sentences can be seen as similar. इनमें से वो सेंटेंस चुनना है जो सिमिलर है किसके. Take any noun, put it in with any verb, and you have a sentence. It never fails. Take any noun, put it in any verb, and you have a sentence. It never fails. Take an apple tree, plant it in a field, and you have an orchard. ये तो नहीं है. Collection of people with the same sports equipment is a sports team. A group of nouns arranged in a row becomes a sentence. Take any vegetable, put some spice in, and you have a dish. हाँ ये ठीक है यार. Which one of the following statements, if false, could be seen as supporting the arguments in the passage? It has been observed that writers sometimes disregard the rules of rhetoric. Rhetoric मुझे समझ तो आया नहीं है. Which one of the following statements, if false, could be seen as the, मतलब इनमें से पूछा है कि कौन सा सपोर्ट नहीं कर रहा. मतलब कि अगर वो फॉल्स होगा तो सपोर्ट करेगा. सपोर्ट करेगा. Disregard the rules of rhetoric. Perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs. Regarding grammar, women writers tend to be more attentive to method. ये तो कहाँ से आ गया. An understanding of grammar helps a writer decide if she or he is writing well or not. इसे मैं छोड़ रहा हूँ. All of the following statements can be inferred from the passage except that sentences do not always have to be complete. All of the following statements can be inferred from a sentence do not always have to be complete. The primary इनमें से कौन सा इन्फर नहीं कह सकता. Sentences do not always have to be complete. यही नहीं इन्फर किया जा सकता. ये किसने कहा सेंटेंस डू नॉट हैव टू बी कंप्लीट. व्हाट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. The sentences remain simple. दूसरा, the subject predicate relation is the same as the noun verb relation. अच्छा ये तो किया जा सकता है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन इज सेम एज द नाउन वर्ब रिलेशन. ऐसा भी हो सकता है. द ग्रामर पुलिस इज अ मेटाफर फॉर क्रिटिक्स हु फॉर्म. मैं जाऊंगा सेकंड ऑप्शन के साथ. Few realize that the government of China governing an empire of some 60 million people during the Tang dynasty 618 to 907 implemented a complex financial system recognized grain grain, coins, and textiles as money. Coins did have certain advantages. They were durable, recognizable, and provided a convenient medium of exchange, especially for small transactions. However, there were also disadvantages. A continuing shortage of copper meant that the government mints could not produce enough coins for the entire empire to the extent that for most of the dynasty's history, coins constituted only a tenth of the money supply. One of the main objections to call for taxes to be paid in coin was that peasant producers who would weave cloth or grow grain, the other two major currencies of the Tang, would not be able to produce coins and therefore would not be able to pay their taxes. As coins had advantages and disadvantages, so too did textiles. If in a circulation for a long time period, they would show signs of wear and tear, stained, faded, and torn bolts of textiles and less value than a brand new bolt. Furthermore, a full bolt had a particular value if consumers cut textiles into smaller pieces to buy or sell something worth less than a full bolt, they had too greatly lessened the value of the textiles. Unlike coins, textiles could not be used for small transactions. As an official noted, textiles could not be exchanged by the foot and the inch, but textiles had some advantages over coins. For a small textile production was widespread and there were fewer problems with the supply of textiles.
Widespread and sorry दोबारा नहीं पढ़ना है. For large transactions, textiles weighed less than their equivalent in coins, since a string of coins could weigh as much as 4 kg. Furthermore, the dimension of a bolt of silk held remarkably steady from the 3rd to the 10th century, 56 centimeter wide and 12 meter long. The values of different textiles were also more stable than the fluctuating value of coins. Government also required the use of the textiles for large transactions. Coins, on the other hand, were better suited for small transactions and possibly given the cost of the transporting coins for a more local usage. Grain for a sorry आगे नहीं पढ़ना so पीछे नहीं पढ़ना for a more local usage. Grain, because it rotted easily, was not used nearly as much as coins and textiles, but taxpayers were required to pay grain to the government as a share of their annual tax obligations, and official salaries were expressed in weights of grain. In actuality, our own currency system today had some similarities, even it is changing in front of our eyes. We have cash, coins for small transactions like paying for parking at a meter, and banknotes for other items, checks and debit cards for other, often larger types of payments. At the same time, we are shifting to electronic banking and making payments online. Some young people never use cash, do not know how to write a check, and do not. ऑलराइट, मनी सिस्टम की बात हो रही है चाइना के रेफरेंस के साथ, फिर हमारे मॉडर्न आज जो सिस्टम उससे कंपेयर किया गया है. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन for a small purchase in the local market that is worth one-eighth of a bolt of a cloth, making the payment with the appropriate weight of grain would not be an economically sound decision for a small purchase in the local market that is worth 1/18th. Paying with a faded पहला तो है making the payment with the appropriate weight of grain, ये तो ठीक है चलो. Paying with a faded bolt of cloth that has approximately the same faded bolt of cloth. ओके, इसे रख सकता हूं मैं. Cutting one-eighth of the fabric from a new bolt to pay the amount, using coins issued by the government to make the payment, using coins issued by the government make the payment, ये भी ठीक है. दूसरे और तीसरे में से मुझे लग रहा है पेइंग विद अ फेडेड, थर्ड वाला सामने होगा क्योंकि वो अपनी उसकी भी वैल्यू खो देगा, जो उसे पे कर रहा है तो उसे ज्यादा पे भी करना पड़ सकता है, और जो उसके पास कपड़ा बचेगा उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी. According to the passage, the modern currency system shares all of the following features with that of the Tang, except that it uses different currencies for different situations. ठीक है, its currencies fluctuate in value over time. Its currencies fluctuate in value over time. ये वाला कम है. It is undergoing transformation. It uses different materials as currency. Different materials. ठीक है, paper और metal. According to the passage, the modern currency system shares all the following features with that of the Tang, except that it is undergoing transformation. ये कोई फीचर तो नहीं है, बट मुझे अगर जो लगाना है वो ये लगाऊंगा. इट्स करेंसीज फ्लक्चुएट इन वैल्यू ओवर टाइम. ऐसा किसी ने नहीं बोला है क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे उसने ये बोला ही नहीं कि यहाँ पे हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है. टैंक के टाइम पे तो कर रही थी, मान लो ग्रेन्स की वैल्यू कम हो जाती थी, क्लोथ की ओवर टाइम कम हो जाती थी, और क्या बच गया अपने कॉइन्स, कॉइन्स की वैल्यू कम नहीं होती थी, बट बाकी तो हो रही थी. यहाँ पे चेक, कैश और इन सब की वैल्यू कम नहीं हो रही है. इन्फ्लेशन वगैरह की बात वो कर नहीं रहा. In the context of the passage, which one of the following can be inferred with regard to the use of currency during the Tang era? Copper coins were more valuable and durable than textile. In the context of the passage, which one of the following can be inferred with regard? Copper coins were more valuable and durable than. Sorry. कहाँ दिमाग चला जाता है यार. In the context of passage, which one of the following can be inferred with regard to the use of currency during Tang era? Copper coins were more valuable and durable. नहीं, मतलब उनसे ज्यादा ड्यूरेबल तो थे, उनसे ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं थे. और ड्यूरेबल थे कि नहीं, ड्यूरेबल की बात नहीं, वैल्यूएबल तो नहीं थे. ग्रेन्स वर द मोस्ट यूज करेंसी, ये भी गलत है. करेंसी दैट डिटीरियोरेटेड इजीली वाज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, नहीं, वो कभी कभार सैलरीज पे करने के लिए भी यूज होता था. ग्रेन करेंसी यूजेज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ऐसा हम बोल सकते हैं.
When discussing textile as currency in the Tang period, the author uses the words steady and stable to indicate all of the following except when discussing textiles as currency, the author uses the words steady and stable to indicate all of the following except steady and stable, reliable measurements, the reliable transportation, reliable supply. Reliable supply और reliable transportation में क्या अंतर है? Transportation और पूछूंगा मैं one. दस से तेरह. In the late 1960s, while studying the northern elephant seal population along the coast of the Mexico and California, Bernie LaBeouf and his colleagues couldn't help but notice that the threat calls of the males at some sites sounded different from those of the males at the other sites. That was the first time dialects in a non-human mammal. All the other elephant seals that exist today as descendant of the small herd that survived on Isla Guadalupe, Juvia. In the 19th century, as the tiny population grew, northern elephant seals started to recolonize, forming breeding locations. It was precisely on the more recently colonized islands where Labov found that the tempos of the male vocal displays showed stronger differences to the ones that Isla Guadalupe, the founder colony. मतलब वो बोल रहा है कि उनकी जो डायलेक्ट्स है और जो उनकी वोकल्स है उसमें थोड़ा डिफरेंट है उनकी जो थ्रेड कॉल्स हैं कौन सी कॉल्स हैं उनमें डिफरेंस है जो ओरिजिनल जहाँ पे वो बचे थे वहां से फैले वहां पर और एक और जो वहां पे टेस्ट कराए वहां in order to test the reliability of these dialects over time, LaBeouf and other researchers visited Ano Nuevo Island in California, the island where males showed the slowest pulse rates in their calls. Every winter from 1968 to 72, what we found is that the pulse rate increased, but it still remained relatively low compared to the other colonies we had measured in the past. LaBeouf told me at the individual level, the pulse of the calls stayed the same. A male would maintain his vocal signature throughout his lifetime, but the average pulse rate was changing. Immigration could have been responsible for this increase, as in the early 1970s, 43% of the male on Anu Nuevo had come from southern rookeries that had a faster pulse rate. This led Lapov and his collaborator Louis Petrinovic to deduce that the dialects were perhaps a result of the isolation over time after the breeding sites had been recolonized. For instance, the first settlers of Año Nuevo could have had by chance calls with low pulse rates. At other sites where the scientists found faster pulse rates, the opposite would have happened. Seals with faster rates would have happened to arrive first. As the population continued to expand and the islands kept on receiving immigrants from the original population, the calls in all locations would have eventually regressed to the average pulse rate of the founder colony. In the decades that followed, scientists noticed that the geographical variations reported in 1969 were not obvious anymore in the early 2010s. While studying the elephant seals of New Island, Casey noticed too that the Labov had heard decades ago was not what she heard now. By performing more sophisticated statistical analysis on both sets of data, Casey and Labov confirmed that dialects existed back then but had vanished. Yet there are other differences between the males from the late 1960s and their great-great-grandsons. Modern males exhibit more individually diversity and their calls are more complex, while 50 years ago the drumming pattern was quite simple and the dialects noted just a change in tempo. Casey explained the calls recorded today have more complex structures, sometimes featuring doublets or triplets. अब ऐसा क्यों हुआ है वो मुझे नहीं पता है बट देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर दैट द call pulse rate of male northern elephant seals in the southern rookeries was faster because from the passage it can be inferred that the call pulse rate of the male northern elephant seals in the southern rookeries was fast. रीजन भी दे रखा है उन्होंने.
That the call pulse rate of male northern elephants in the southern rookeries was faster because the calls of male northern elephant seals in the southern rookeries have more sophisticated structure containing tablets and tablets. The male ये तो कुछ नहीं है शायद दूसरा वाला तो कोई रीजन ही नहीं है. The male northern elephant seals of Isla Guadalupe with faster call pulse rates might have been the original setters of the South Rookeries, Southern Rookeries. A large number of male northern elephant seals from Anu Island might have migrated to the Southern Rookeries to recolonize them. पहले ये कहाँ है Southern Rookeries? At the individual level, the pulse of the calls stayed the same. A male would maintain his vocals, but the average pulse rate was changing. Immigration could have been responsible for this, as in the early 70s, 43% of the males on New had come from southern Greece that had a faster pulse rate. Had come from southern Rookeries. This led Labov and his collaborator to deduce that the dialects were perhaps a result of isolation over time after the breeding sites had been recolonized for by chance calls with low pulse rates. From the passage, it can be inferred that the call pulse rate of the male northern elephant seals in the southern Rookeries were faster because at the northern all other elephant seals that exist today. यहाँ पे slowest pulse rates थे in their calls. Slowest pulse rates. Relatively low compared to the other colonies we had measured in the past. यहाँ बोल रहा है कि at the individual level the pulse आप जो चेक कर रहे हैं at the individual level the pulse of the calls remained the same. A male would maintain his vocal signature throughout his lifetime. Islands kept on receiving immigrants from the original population. The calls in all locations would have been eventually regressed to the average pulse rate. कम हो गई होगी. While studying another elephant seals on अच्छा ये नदन एलिफेंट जो थे और ये थे आनो न्यू आइलैंड पे वो बोल रहा है कि अच्छा यही सदर्न क्रीज में भी थे. All another elephant seals that exist today are descendants of the small herd that survive on Isla Guadalupe जो भी है और as the tiny population grew northern elephant seals started to recolonize former breeding locations. It was precisely on the more recently colonized islands where Labov found that the tempos of the male vocal displays showed stronger differences to the ones from Isla Guadalupe, the founder colony. तो बोल रहा है कि the from the passage it can be inferred that the call pulse rate of male northern elephant seals in the southern rookeries was faster. southern rookeries की बात यार यहाँ हुई है कहाँ हुई है.
As in the early 1970s, 43% of the males on Anu had come from southern rookeries that had a faster pulse rate. तो बोल रहा है कि large number of male other sorry ये elephant seals migrate from the calls of male northern elephant seals in the southern rookeries. ये भी नहीं the male northern elephant seals ये हो सकता है. Which one of the following best sums up the overall issue of the transformation of male northern elephant seal calls? The average call pulse rate is in the recolonized breeding locations exhibited a gradual increase until they match the tempo at the founding colony. Owing to migration in the aftermath of near species extinction, the calls have transformed or exhibiting complex composition. The calls have transformed from exhibiting simple composition, less individual variety, and great regional variety to complex composition, great individual variety, and less regional variety. The calls have transformed from exhibiting simple great individual variety and less regional variety to complex composition. लास्ट दो में से कोई एक है. The rhythmic pattern was quite simple and the dialects noted just a change in tempo. Casey explained the calls recorded today have more complex structures, sometimes featuring वो बोल रहा है कि at the individual level the pulse of the calls stayed the same. Average pulse rate was changing. Less individual variety and great regional variety. Great regional variety तो कभी थी ही नहीं ना. Like owing to migrations in the aftermath of near species extinction, the average call pulse rate in the recolonized breeding locations exhibited a gradual increase. पर gradual increase नहीं है ना, decrease है. वो तो high तो तब था, बाद में तो low हुए. Owing to migration in the aftermath of near species extinction, the call have transformed from exhibiting complex composition. ही उल्टा बोल रहा है. Complex तो बाद में हुई है. अब ये exhibiting simple composition, less individual variety. हाँ अब इंडिविजुअल वैरायटी अब ज्यादा हो गई है, ठीक है. Which one of the following conditions, if true, would have ensured that male northern elephant seals dialects did not disappear? Which one of the following conditions, if true, could have ensured that male northern elephant seal dialects did not disappear? The call tempo of individual male seals. The call tempo of individual immigrant male seals changed to match the average. There was one more founder colony with the same average. Beside Guadalupe, there was one more surviving colony with the same average male called Tempo from which no migration took place. It could have ensured that male northern elephant seal dialects did not disappear.
फोर्थ वाला, द कॉल टेम्प ऑफ इंडिविजुअल इमिग्रेंट में। दूसरा, द कॉल टेम्प ऑफ इंडिविजुअल इमिग्रेंट मेल्स इज चेंज टू मैच द एवरेज। पता नहीं क्या होता है। All of the following can be inferred from the above study as described in the passage, except that changes in population and migration had no effect on the call pulse rate. All of the following pairs following can be inferred from the above study as, ये नहीं है, पहला नहीं है। Male northern elephant seals might have exhibited dialects they had they not become nearly extinct in the 90s. दूसरा, द एवरेज चौथा कौन सा है? आई डोंट गिव अ डैम। नहीं होगा एग्जाम तो अपने से ना हो। ये साला समझ में ही नहीं आता कुछ। वीएनआर की है, इसमें कितने क्वेश्चन है? 1405 क्वेश्चन है। अब से करने बैठूंगा, मेरे पास टाइम इतना है नहीं। तो मैं ट्राई करता हूँ समरी वाले। For nearly a century, most psychologists have embraced one view of intelligence. Individuals are born with more or less intelligence potential. This potential is heavily influenced by heredity and difficult to alter. Experts in measurement can determine a person's intelligence early in life, currently from paper and pencil methods, perhaps eventually from examining the brain in action or even scrutinizing his or her genome. Recently, criticism of this conventional wisdom has mounted. Biologists ask if speaking of a single entity called intelligence is coherent and question the validity of measures used to estimate heritability of a trait in humans who, unlike plants or animals, are not conceived and bred under controlled conditions. Right? क्या पूछा हमसे? Alternate summary. Biologists have criticized that conventional wisdom that individuals are born with more or less intelligence potential. ये ठीक है अपना। Biologists have questioned the view that intelligence is a simple single entity and the ways in which what is inherited and the ways in which that is inherited. क्वेश्चन क्या क्रिटिसाइज नहीं किया है? Biologists have questioned the long-standing view that intelligence is ये ठीक ठीक सा ठीक लग रहा है। Biologists have started questioning psychologists' view of intelligence as measurable, immutable characteristic of an। यार ये भी ठीक लग रहा है, क्या बात है, सब ठीक लग रहा है मुझे। As Soviet power declined, the world became to some extent multipolar, and Europe strove to define an independent identity. What a journey Europe has undertaken to reach this point! It had, in every century, changed its internal structure and invented new ways of thinking about the nature of international order. Now, at the culmination of an era, Europe, in order to participate in it, felt obliged to set aside the political mechanisms through which it had conducted its affairs and its affairs for a 3.5 centuries, impelled also by the desire to cushion the emergent unification of Germany. The new European Union established a common currency in 2002 and a formal political structure in 2004. It proclaimed a Europe united, whole, and free, and adjusting its differences by peaceful mechanisms. पहला ठीक लग रहा है। Europe has chosen to lower political and economic heterogeneity in order to adapt itself to an emerging multipolar world. मल्टीपोलर की बात तो पहले हो रही है ना। As Soviet power declined, the world became to some extent multipolar, and Europe strove to define an independent identity. What a journey Europe has taken to reach this point!
Europe has chosen to lower potential and economic heterogeneity in order to political and economic heterogeneity. Europe has consistently changed its internal structure to successfully adapt to the changing world order. The establishment of a formal political structure in Europe was hastened by the unification of Germany and the emergence of a Europe has chosen to lower political and economic. मैं जाऊंगा पहले के साथ. यूरोप has chosen दूसरा क्या यूरोप has chosen to lower political and economic. For years, movies and television series like Crime Scene Investigation paint an unrealistic picture of the science of voices. Paint an unrealistic picture of the science of voices in the 1994 movie Clear and Present Danger. An expert listens to a brief recorded utterance and declares that the speaker is Cuban age 35 to 45. Educated in the Eastern United States, the recording is then fed to a supercomputer that matches the voice to that of a suspect, concluding that the probability of correct identification is 90%. The sequence sums up a good number of misimpressions about forensic phonetics which have led to errors in real life justice. Indeed, that movie scene exemplifies the so-called CSI effect, the phenomenon in which judges hold unrealistic expectations of the capability of forensic sciences. Although voice recognition is often presented as evidence in legal cases, its scientific basis can be shaky. Voice recognition, as used in many movies to identify criminals, has been used to identify criminals in real life. Also, movies and televisions have led to the belief that the use of forensic is robust. Movies and televisions have led to feature prominently. तीसरा टाइम हो गया अपना तीसरा हमने 23वां में उसके ऊपर किया है. लेट्स सी कितने सही हो रहे हैं इस वाले में. तो यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया. ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. इसे सीखेंगे समझेंगे याद करेंगे और नहीं बोलेंगे कि फ्रस्ट्रेट हुए हैं. वो तो है यार जो है सो है ना. इसको चेक करते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी वो हम सीखेंगे क्योंकि देखो एक हमने जो नदन नदन एलिफेंट सील का नाम वही कंफ्यूज कर रहा था उसे सिर्फ जानवर ही बोल लेता तब भी मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता. बट वो अगर उन चीजों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है और वो इंसान पकड़ पाता है फोकस के साथ और मेरा फोकस है थोड़ा हिला हुआ. तो वो मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा. मुझे ध्यान रखना है दो तीन चीजें मैंने यहाँ से सीखी. क्या सीखी है कि ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड जानवरों के नाम है उन्हें पूरा नहीं पढ़ना है या फिर उन पर इतना फोकस नहीं करना है. मेन फोकस कहानी पे करना है. उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं. उसके अलावा हमने आज फिर नहीं चूज किया कि कौन सा इजी. वैसे यार वोकेबलरी वाला इजी था अगर मैं कुछ भी कर रहा तब भी उसे चुनता. और एक ही बार रीड करना है. एक ही बार रीड करने से अभी तो मेरा ठीक है फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ मुझे नहीं आइडिया लग रहा था. बट ये चीज हमें फोकस करके करनी ही पड़ेगी कि हम यार एक ही चीज के बारे में सोच सकें. ठीक है वरना नहीं हो पाएगा. हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आई डोंट नो. शायद 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. 15 में से 12 ठीक होते हैं. आई एम हैप्पी. और जो यहाँ से सीखें वो हम अप्लाई करेंगे. ठीक है बात करते हैं क्या क्या सीखे अगली वीडियो में जब एनालाइज करेंगे. सी यू बाय.